بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا كريم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Just to continue with covenant number 165 in relation to invoking the name of Allah subhanahu wa ta'ala at the beginning of every meritorious task, especially before eating. We shall continue inshallah azza wa jal. Perhaps you may be asking the question that we have surpassed the age of 30, 40, 50 and you are teaching us about the etiquettes of food, etiquettes of eating. Well, in all honesty, after reading what Imam Sha'rani rahmatullah alayhi has written in this kitab, the Muhammadan Covenants, Lawaqihul Anwar I beg to differ and I beg to say that many of the people don't know how to eat. True, quite true. जी, तो यानी ये सवाल उठ सकता है कि यहाँ खाने की बातें कर रहे हैं, खाना किस तरह खाना चाहिए, किस नीयत के साथ खाना तनाउल करना चाहिए, जब खाना सामने रखा जाए तो क्या इधर उधर हाथ बढ़ा के खाना चाहिए या जो बर्तन के सबसे नज़दीक आप जिस बर्तन में खा रहे हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है वहाँ से खाना चाहिए. तो ये सारे आदाब बयान किए जाते हैं इसलिए कि बहुत अफसोस के साथ कि हमें खाना भी नहीं आता है कि किस तरीके से खाना चाहिए, वो भी हमें नहीं आता है. यानी बहुत बड़ी बातें करते हैं हम कि ये करना है वो करना है, लेकिन हमें खुद जो बेसिक चीज़ें हैं वो करनी नहीं आती सुन्नत के मुताबिक. तो फिर ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है. अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुआफिक खाने की तौफीक अता फरमाए. तो फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसमिअतु सय्यदी अली अल-खवास रहिमहुल्लाह यक़ूल समुल्लाह तआला अला कुल्ली हरकतिन वसयकूनु युबारकु लकुम फीहा वमा शुरिअत at-तकालीफ कुल्लुहा इल्ला लिहुदूर al-abd फीहा मअ अल्लाह सुब्हानहु व तआला. I heard my Shaykh Ali al-Khawwas rahimahullah say, mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala in every movement, in every point of your life. Say Bismillahir Rahmanir Rahim. हर वक्त दरवाज़ा खोलते वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खाना सामने हो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खाना खाने के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हर चीज़ हर वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर पढ़ते रहें. तो क्या होगा? वसयकूनु युबारकु लकुम फीहा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उन तमाम चीज़ों में बरकत अता फरमाएगा. अल्लाह सुब्हानहु व तआला, when you invoke his name in every movement, Allah subhanahu wa ta'ala will put barakah in every affair of yours, in every movement of yours. Subhanallah. وَمَا شُرِعَتِ التَّكَالِيفُ كُلُّهَا إِلَّا لِحُضُورِ الْعَبْدِ فِيهَا مَعَ اللَّهِ. And obligations have not been stipulated. Allah subhanahu wa ta'ala has not made things fard upon us only because of the reason that a servant, he feels the presence of Allah subhanahu wa ta'ala in those actions. Yani, why did the Messenger of Allah say that we mention the name of Allah when we eat, before we drink, before we enter the home? Why? So that when we even do these things, we have the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, so that the servant deems himself to be present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, to have this conscious belief that I am present in the court of Allah. I mentioned to you last week, the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala actually mentioned that if you do not bring upon a state
if you do not bring upon yourself the same state that you have in namaz whilst you are eating, then according to us you're not a perfect wali of Allah subhanahu wa ta'ala. यानी अगर आपकी कैफियत खाना खाते वक्त ऐसी नहीं है जो कैफियत आपकी नमाज के अंदर है, तो फरमाते हैं कि आप अल्लाह के नज़दीक कामिल वली नहीं करार दिए जा सकते। ये वही कैफियत होनी चाहिए खाना खाने के वक्त जो कैफियत हमारी नमाज के अंदर होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम हाजिर हैं, पूरी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें ये इनायत फरमाए। وكان والدي عبد الرحمن وهو ابن 3 سنين يقول كلما يأكل بسم الله الشافي من غير أن أعلمه ذلك وهي مناسبة للمقام. My son Abdul Rahman, who was only 3 years of age, this is again tarbiyah from the parents. He says, Imam Sha'rani rahimahullah says, my son Abdul Rahman rahimahullah, he was only 3 years of age. He would say, whenever he would eat, he would say with every morsel of food, Bismillah Shafi, in the name of Allah, the one who gives shifa, the one who gives cure. Despite the fact that I did not teach him to say so, and he says this is most appropriate to the maqam, to the place, because when you eat, there is obviously harm. There's many harm in eating foods that are not good for you or overeating. But when you mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala, it is hoped inshallah that if there was a potential harm in that food, Allah subhanahu wa ta'ala will remove it from you. So my son, मेरे साहबजादे 3 साल के थे और मैंने उनको कहा भी नहीं था, और वो हर लुकमे के साथ बिस्मिल्लाह शाफी पढ़ा करते थे। और ये खाने के वक्त बहुत ज़्यादा मुनासिब है कि हम यही कहें बिस्मिल्लाह शाफी, ताकि ये खाना हमारे लिए शिफा बन जाए इंशाअल्लाह। ولا يخفى أن الخلق ولو علت رتبتهم في المقامات يحتاجون إلى التسمية قياما بشعائر السنة، خلاف ما عليه بعض أهل الشطح من قولهم إنما يسمي الله على طعامه من كان يرى ملكا مع الله تعالى، أما من يرى الملك في الطعام لله تعالى وأنه مقدمه إليه فلا يحتاج إلى تسميته، لأن طعام الحق تعالى إذا قدمه لعبده بركة في نفسه لا يقبل الزيادة في النمو. वो फरमाते हैं फिर, it should not be concealed from you that the creation of Allah, that a person, however high his status might be, however preeminent he may be, he should always mention the name of Allah. He is always in need of mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala at the beginning of every single affair, at the beginning of every single state, in order to establish the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी चाहे वली कितना ही बड़ा हो जाए, अल्लाह ताला के यहाँ कितना ही पहुंचा हुआ हो, लेकिन उसका मकाम कितना ही बुलंदो बाला हो, उसके बावजूद भी ये इसका हाजतमंद है कि वो हर शय के वक्त, हर चीज़ के करने से पहले अल्लाह ताला का नाम ले, इसलिए कि इसके ज़रिए सुन्नत मुबारका पर अमल होगा। उन लोगों के खिलाफ जो जाहिल लोग हैं, जो कहते कि हम तो पहुंचे हुए हैं और हमें तो बिस्मिल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खाना खाते वक्त हम खाना ये समझते कि अल्लाह ताला की मिल्कियत है, ये अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सारी चीज़ अल्लाह ताला की है, उसमें अगर बिस्मिल्लाह इस नीयत से हम पढ़ेंगे कि खाने के अंदर ज़्यादती होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो अल्लाह ताला की मिल्कियत है, ये इसकी मोहताज नहीं कि हम उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसकी मोहताज नहीं है। तो ये बयान फरमा रहे हैं, he says here, this is contrary to what some ignorant people say. They say that the one who sees milkiya, yani ownership with Allah subhanahu wa ta'ala, ownership of the food with Allah subhanahu wa ta'ala, he should mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala. As for the one who sees complete and absolute possession and ownership of the food and every single blessing from Allah and to Allah subhanahu wa ta'ala, someone who believes that Allah subhanahu wa ta'ala is the absolute owner of everything, and it is Allah subhanahu wa ta'ala who has forwarded to him, who has presented to him this food, then he is not in need of saying Bismillahir Rahman. This is their obviously their understanding, because the food that Allah subhanahu wa ta'ala gives, when Allah subhanahu wa ta'ala gives it to the servant, it is filled with barakah. So therefore it does not need for a person to say Bismillahir Rahmanir Rahim, because it does not accept any increase in growth. यानी ये कहते हैं कि जब अल्लाह ताला हमें ये खाना दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो खाना अल्लाह ताला हमें पेश करे उसके अंदर बहुत बरकतें होगी,
तो हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? बरकत के लिए, क्या, ताकि उसमें बरकत ज़्यादा हो। तो वो कहते हैं, वो लोग जाहिल लोग ये कहते हैं कि जब ये खाना अल्लाह ताला ही की तरफ से है, सारी मिल्कियत अल्लाह ताला की है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पहले ही से बरकत रखी हुई है, बिस्मिल्लाह कहने की हाजत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बरकत नहीं, यानी बरकत ज़्यादा नहीं होगी इसके अंदर, पहले ही से बरकत है। यानी ये उनकी सोच है। जी जी। वल्हक़्क़ु अन्न कुल्ल तआमिन क़ुद्दिम लिलअब्दि लहु अजान, लेकिन हकीकत हाल ये है कि जो भी खाना आदमी खाता है और आदमी के सामने पेश किया जाए, उसकी दो सूरतें हैं। वजहुन इला निस्बतिही इल अब्दि व कसबिही व वजहुन इला निस्बतिही इल हक़्क़ि तआला व खल्क़िही। एक सूरत, एक निस्बत तो ये कि आदमी ने खाना कमाया, पैसे कमाए और उस पैसे के ज़रिए उसने खाना ख़रीदा और उसको पकाया, तो एक निस्बत बंदे की तरफ से है। और खाने की दूसरी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ही ने खाना अता फरमाया, अल्लाह ताला इसको पैदा फरमाने वाला है। तो फरमाते हैं कि पहली सूरत यानी बनने की तरफ से अगर देखा जाए तो हम बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ेंगे ताकि उसके अंदर ज़्यादती यानी बरकत होगी, इसके अंदर बरकत ज़्यादा होगी। और अगर अल्लाह ताला की निस्बत से हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बरकत ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही से अल्लाह ताला के तमाम अशिया में बरकत ही पहले से हासिल है। सुभान अल्लाह। So he mentions one thing here. The truth of the matter is this. The fact of the matter is, the truth is this, that whenever food is presented to a servant, it has two sides, it has two aspects. One aspect in relation to the food being something which the person had earned through livelihood and had purchased from the shop, from the marketplaces, the food that it purchased and had made. The other side of the food is that Allah subhanahu wa ta'ala had given this food to him. It is ultimately Allah subhanahu wa ta'ala who is the creator of everything. Allah subhanahu wa ta'ala has given this food to you. So in relation to this food being connected to the servant, you say Bismillahir Rahmanir Rahim, because now this food has the potential to grow in terms of barakah, has the potential to grow in terms of quantity, as we mentioned to you before. But with it being relative to and in terms of it being connected to Allah subhanahu wa ta'ala, in terms of Him being the ultimate creator of everything, then it does not accept ziyada, it does not accept growth, because obviously whatever Allah subhanahu gives to a servant, it already has barakah in it. Yeah, do you understand this? Subhanallah. So therefore you should pray Bismillahir Rahmanir Rahim, because every food has two sides of the coin. One side is in relation to you, one side in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever is in relation to you, it accepts ziyada, increase. So therefore you say Bismillahir Rahmanir Rahim to increase the barakah. Bismillahir Rahmanir Rahim will increase the quality and the quantity of the food. जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो खाने की मिकदार में भी बरकत होगी और खुद खाने के अंदर भी बरकत होगी। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं वदखल अलैहि शेख शमसुद्दीन अल-अबूसीरी अहद अस्हाब शेख अबी सऊद अल-जारिही रहमहुल्लाह फअकल वलम युसम। मेरे पास एक दिन शेख शमसुद्दीन अबूसीरी या बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बोसेरी नहीं, दूसरे बुजुर्ग थे जो शेख अबू सईद जारिही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में से थे, वो मेरे पास आए, वो हमारे पास आए, हमें उनकी ज़ियाफ़त की, खाना पेश किया, तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ी, उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये अल्फाज नहीं कहे और कहा तआमुल उस्तादीन ला यहताजु इला तस्मियतिल्लाहि तआला अलैहि लिअन्नहु बरकतुन फी नफ्सी। और कहा कि जो उस्ताद बुजुर्ग लोग हैं उनके खाने में खुद बरकत ही रखी हुई होती है, इसलिए हम बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले ही से बरकत मौजूद है। यानी this certain Sheikh Shamsuddin al-Busiri rahimahullah, one of these disciples of Sheikh Abu Sa'id al-Jarihi, he came to us, we entertained him, we presented food to him, and when he began to eat, he didn't say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, he didn't mention the name of Allah. And then he said, the reason why I don't say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, because the food of the mashayikh of these friends of Allah subhanahu wa ta'ala is already filled with barakah. So therefore, by saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I'm not going to add more barakah into it. It's already filled with barakah. Do you understand? It's already filled to the brim with barakah. So therefore, I am not in need of saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So what does Imam Sha'rani say? فَأَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ. I presented an argument and a proof against him. मैंने उनके सामने उनके खिलाफ दलील पेश की और कहा
कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप। मैंने ये जो पहले बयान किया कि खाने की दो सूरतें होती है, एक सूरत तो बंदे की तरफ निस्बत होती है और एक खाने की सूरत और उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और जाहिर सी बात है कि खाने की निस्बत जब बंदे की तरफ से होगी उसमें बरकत की जाती के लिए आपको जरूर बिस्मिल्लाह कहना होगा। तो जब मैंने ये कहा फराजा इलैहि, he then retracted his statement when I presented the proof against him, rahimahullah, may Allah show mercy on him. فَعْلَمْ ذَلِكَ وَكُنْ مُتَّبِعًا لِلسُّنَّةِ فِي كُلِّ عَمَلٍ سَوَاءٌ عَقَلْتَ مَعْنَاهَا أَوْ لَمْ تَعْقِلْهُ. So, oh my brother, follow the sunnah of the Prophet ﷺ, hold fast onto following the sunnah and the practice of the Prophet ﷺ in every action of yours. Whether you understand the meaning and the wisdom and the pretext behind the sunnah of the Prophet ﷺ or don't understand it, follow the sunnah of the Prophet ﷺ. And as he said at the very beginning, those people who blindly follow the sunnah of the Prophet ﷺ without going and being investigating into the nitty-gritty about the wisdom and the pretext and the reason why this has been stipulated, they have a greater rank in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than those who follow the sunnah of the Prophet ﷺ after understanding the wisdom and the reason why. I gave you an example about miswak. बाज़ लोग, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सुन्नत पर उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको साइंसी फायदा नहीं बताएंगे। मसलन अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि अगर मिसवाक करेंगे तो मुंह की बदबू खत्म होगी, आपके दांत इंशाल्लाह 70 साल की उम्र में भी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, तो आपकी आंखें खुल जाएंगे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कही आपने। मोटापा ख़त्म होगा और इससे आपका खाना हज़म होगा। तो खाना हज़म होगा इससे मुराद ये नहीं कि आप फिर माशाल्लाह जितना चाहे खाने फिर उसके बाद मिसवाक कर ले, नहीं, यानी ये इसी में बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये सुन्नत पर अमल करेंगे। लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका मकाम ज़्यादा है जो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी गर्ज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सुन्नतों पर अमल करता रहे, चाहे वो सुन्नतों के पीछे उसकी इल्लत और उसका मकसद समझे या ना समझे, उसके पीछे क्या हिकमत है, चाहे वो समझे या ना समझे, जो हजरात उस पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उसके प्यारे रसूल की मोहब्बत में इनका मकाम अल्लाह के यहाँ ज़्यादा होता है। तो ये नीयत का फ़र्क है, नीयत का फ़र्क है। ये सारी चीज़ें आपको, ये बुजुर्ग का वाक़या था कि आपने किसी से पूछा कि आपने अपने दीवार, अपने घर में खिड़की क्यों रखी है, तो कहा ताकि उसके अंदर फ्रेश है, अच्छी हवा आ जाए, ताकि मेरा घर का मौसम भी अच्छा हो जाए, मुझे ठंडक पहुँचे। तो आपने उससे कहा कि काश अगर तूने ये नियत की होती कि अगर मैं, चूँकि वो मस्जिद के बिल्कुल पड़ोस में थे, कि मैं खिड़की इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं इस खिड़की को खोलूँगा तो उसके अंदर से मुझे अजान की आवाज़ आएगी। तो दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। जाहिर सी बात है अगर आप खिड़की खोलेंगे तो ये नहीं कि हवा नहीं आएगी, हवा आएगी चाहे आप नियत करें या ना करें, लेकिन आपने अच्छी नियत की अजान की तो ये आपका फ़ेल इबादत में करार दिया जाता है। तो खाना तो हम हर रोज़ खाते हैं, पानी तो हम हर रोज़ पीते हैं, अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे खाने से पहले, अगर हम पीने से पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी इबादत करा दी जाएगी। अगर हम खाना इस नियत से खाएंगे ताकि अल्लाह ताला की इबादत हम कर सकेंगे, इससे हमें ग़िज़ा और इससे हमें क़ुव्वत हासिल होगी, इस क़ुव्वत के ज़रिए हम अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, तो ये सारा वक्त जो हम खाने में गुजारेंगे ये सारा का सारा इंशाअल्लाह इबादत में करार दिया जाएगा। ओके, فإنه لا أكمل مما شرعه الحق ما شرعه الحق تعالى على ألسنة رسوله أبدا والله عليم حكيم. And then he says a beautiful thing, there is nothing more perfect and there is nothing that has greater wisdom than that which Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated and legislated on the tongue of his messengers alayhi salatu wa taslim. Whatever the Prophet has mentioned, there is immense wisdom behind it, even if you understand it or not. Science is discovering the wisdom behind the sunnah of the Prophet today after 14 centuries, after 1400 years. Since Rasulullah has mentioned those ahadith, science is discovering the benefits of following the sunnah of the Prophet ﷺ. An advertisement which people sent me on WhatsApp about Europe and the West advertising the miswak, the wooden brush. So again, Muslims were not doing it, but then after looking at the Harvard University discovery that miswak has certain benefits, has many benefits in terms of reducing plaque, in terms of maintaining health hygiene of the teeth, they will start to do it.
But this is not the case. We should follow the sunnah of the Prophet ﷺ because we love the Prophet ﷺ. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وروى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكلوا بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى الله لكفاكم. Imam Abu Dawud al-Tirmidhi, who declares this as Hasan, Sahih, fair and sound hadith, and Ibn Majah, Ibn Hibban mentions in his Sahih on the authority of Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha that the Prophet ﷺ was eating food amongst his companions. There were 6 of them. The Prophet ﷺ was partaking from the food with 6 of his blessed companions. فَجَاءَ عَرَبِيٌّ, a Bedouin came. فَأَكَلُوا بِلُقْمَتَيْنِ, he finished the entire food in 2 mouthfuls. In 2 morsels of food, he finished the entire. And there was no barakah left. As soon as he took 2 morsels of food, خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى الله لكفاكم. If he was to mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala before eating, not to pounce on the food as he did and eat it, we would have still had barakah. This food would have sufficed all of you. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सहाबे किराम के साथ खाना तनाउल फरमा रहे थे. सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी और उसके बाद एक आराबी आया, देहाती, और उसने 2 लुकमे में सारा खाना खत्म कर दिया. एक लुकमा लिया, आधा खत्म हो गया. दूसरा लुकमा लिया, सारा खत्म हो गया. यानी बर्तन में एक लुकमा भी बाकी नहीं रहा. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता तो ये खाना तुम्हारे लिए किफ़ायत करता. अल्लाह अकबर. तुम लोग सैर होकर के खाते, लेकिन चूंकि इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी इसलिए उससे बरकत उठा ली गई. अल्लाहु अकबर. وروى أبو داود وابن ماجة مرفوعا إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله تعالى عليه فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. Imam Abu Dawud and Ibn Majah narrate that whenever any one of you eats food, partakes from food, let him invoke the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And if he forgets and he remembers in the midst of eating, if he forgets to say Bismillahir Rahman at the beginning, then let him say Bismillah fi awwalihi wa akhiri. Bismillah fi awwalihi wa akhiri. एक हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा रहे थे. एक शख्स हाजिर हुए, वो भी खाना तनाउल फरमाने लगे, लेकिन वो भूल से उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़नी, ये भूल गए थे बिस्मिल्लाह पढ़नी. बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए थे तो क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि शैतान उसके साथ खा रहा है. तो फिर उस शख्स को याद आया, तो फिर उसने ये कहा बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी. तो शैतान क़य करने लगा. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार हुए, नजर आए. तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़ाहिर कोई असबाब हमें नजर नहीं आए मुस्कुराने के, आप क्यों मुस्कुराए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स पहले आया था, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, इसकी वजह से शैतान उसके साथ खा रहा था, लेकिन जो ही उसने ये कहा बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी, मैंने देखा कि शैतान क़य कर रहा है, वॉमिट कर रहा है. इसको देख के मुझे हंसी आ गई. सुभान अल्लाह. وروى الطبراني مرفوعا من سره أن لا يجد للشيطان عنده طعاما ولا مقيلا ولا مبيتا فليسمي إذا دخل بيته ويسمي الله على طعامه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions, whomsoever it pleases that Satan doesn't partake from his food, Satan doesn't sleep with him, doesn't do a siesta at his home, Satan doesn't find residence in his home at night, Satan doesn't sleep with him at night, then let him mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala as soon as he enters the home. As soon as you enter the home with the right foot, say Bismillahir Rahmanir Rahim. And let him mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala before partaking from food, before eating food. There is a narration Imam al-Bahani rahimahullah mentions in Sa'adatul Darain fi salati ala Sayyid al-Kawnain sallallahu alayhi wa sallam. Someone complained about poverty and no barakah in sustenance. So the narration goes that when you enter the home, convey salam to the people in the household. When you enter the house, say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to the household. If there is no one in the home, then convey
the greetings of peace to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because as Imam Al-Qadiri rahimahullah mentions, the spirit, the soul of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is present in the house of every single believer. In Sharh al-Shifa he mentions this. And then pray Durood Sharif, as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, and then recite قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. If you do this amal, Allah subhanahu wa ta'ala will give you immense barakah in your rizq. Rizq will come to you from where you can't even imagine, inshallah. You will never face poverty. You will never be in a state where you are in need of begging from other people. You will never face an impoverished state, inshallah azza wa jal. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت عندكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم العشاء. Imam Muslim, Imam Abu Dawood, Imam Al-Tirmidhi, Imam Al-Nasai, Imam Ibn Majah, rahimahullah jami'an, they mention, they narrate this hadith that Rasulullah states whenever a person enters the home and he mentions the name of Allah, says Bismillahir Rahmanir Rahim at the time of entering the home, and before eating, Satan says to his minions, Satan says to his companions, you have found no place of refuge, you have not found no place to spend at night, you have found no food to eat, you have found no dinner, you have no dinner to eat, you have no place to spend at night, to sleep. But when he enters the home, but he doesn't mention the name of Allah, so he doesn't say Bismillahir Rahmanir Rahim, and he doesn't say Bismillahir Rahmanir Rahim at the time of entering the home, Satan says to his companions, to his jailer, you have found a place to rest tonight. You have found a hotel. Yeah? 5-star hotel, you're going to rest with him today. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْعَشَاءَ. And when a person doesn't even mention the name of Allah, doesn't say Bismillahir Rahmanir Rahim before eating, before partaking from the food, before eating, then the Satan says, Wah wah, subhanallah, congratulations to you. You've not only found a hotel to stay in, you've also found delicious intercontinental food. That shall obviously in our homes. Allahu Akbar. So obviously always try and remember to mention the name of Allah subhanahu whenever you do any task. There's a hadith of the Prophet, I'm going to finish. The Prophet said, كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو أجزم أو أبتر. There's a narration, the Prophet said, every meritorious task which is not begun with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, it remains incomplete, it is severed, it is cut off of blessings. So always Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban واسعة وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.